Hello everyone and welcome to my YouTube channel, The United Road. And finally, the World Cup. Yes, the World Cup has arrived. Lot of controversy, lot of debates, lot of discussions whether this World Cup should go on and this and that, so many things. But here we are, and we are going to get along with the opening ceremony and further discussions about how things are looking at in this World Cup, the favorites and other stuff. But once people get in the meantime, I have shared the link. You guys can do it as well, so don't forget to do that. Karan bhai, good evening. And as I said, one of the most controversial World Cups. One of the big I bole yaar, at this point of time looks like the most controversial World Cup, but hopefully the game on the pitch, takes away all the discrepancies. Basically, obviously it cannot be taken away completely, but जो भी हो सकता है भाई, at this point of time यही उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो ढंग से हो in terms of games. करप्शन के चार्जेस तो भाई ऑलरेडी आने लग चुके हैं, तो भाई मैं उस चीज में क्या ही बोलूं. There are also other things. वरुण भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. वरुण भाई अभी भी यूनाइटेड मोड में. पृथ्वी भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. मैं तो भाई बिल्कुल यूनाइटेड वाली जर्सी पहन के बैठा हूँ. और भाई वर्ल्ड कप का मैं बता दूं यार पहले कि वर्ल्ड कप आएगा कहाँ पे. तो भाई वूट पे नहीं आ रहा, वूट से फेंक दिया इन्होंने वर्ल्ड कप. और वहां से स्पोर्ट्स 18 जो चैनल है, उन्होंने वहां से स्पोर्ट्स 18 भी हटा दिया है. ठीक है, तो कुछ नहीं है वूट पे. जियो सिनेमा पे फ्री है. टीवी पे डाउनलोड करना है टीवी पे डाउनलोड कर लो, फोन पे डाउनलोड करना है फोन पे डाउनलोड कर लो. इट्स टोटली फ्री. और भाई जो इनका पैनल बोलते हैं, पैनल में भाई मुझे यहाँ पे रॉबिन्सन दिखे हैं भाई साहब, इंडियन फुटबॉल. अपार्ट फ्रॉम दैट कौन है पैनल में, आई हैव नो आइडिया. चलो वरुण भाई, फाइनली द वर्ल्ड कप इज हियर यार. थोड़ा एज आई सेड कंट्रोवर्शियल है, बट फाइनली इट्स हियर. तो अब जो भी है यही है भाई, इसके अलावा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. पहला गेम है आज, कतर वर्सेस इक्वाडोर. मोस्ट प्रोबेबली आई वोंट बी डूइंग द वॉच अलोंग. उसके पहले जितना भी डिस्कस करना है वो भी वी विल डू. कल से अच्छे गेम्स हैं यार, कल से अच्छे गेम्स है. शमीम भाई से वीवा पोर्चुगल, सही है. तो भाई कल पहला गेम है 6:30 बजे, दैट्स ईरान और इंग्लैंड. और दूसरा है सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स. तो भाई मोस्ट प्रोबेबली मैं सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स करूंगा 9:30 बजे से. सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स, तो वी विल डू दैट गेम. आज कतार जीतेगी. सूरज भाई देखो, कतार का वही सीन है ना, अगर जीत गई तो ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस आ चुके हैं. ठीक है, और अगर नहीं जीती तो दुनिया हंसेगी कि भाई पैसा खिला के भी नहीं जीते. सर बोलते हैं ना, दो धारी तलवार, वो है अभी इनके साथ, वो है उनके साथ. सो अब क्या ही बोलूं भाई. देखो जीतने को तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गारंटीड तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, बट सबके अपने अपने फेवरेट्स है ना यार वरुण भाई. अब मुझे पता है जर्मनी नहीं जीतेगी, मुझे पता है जर्मनी वोंट विन, बट मैं सपोर्ट तो भाई जर्मनी को ही करूंगा टिल द फाइनल विसल. ठीक है, टिल द फाइनल विसल. भाई अर्जेंटीना और ब्राजील का हाइप है क्योंकि उनका फॉर्म है यार. ठीक है, द फॉर्म दैट दे हैव कैरीड, वो है पूरा. ओपनिंग सेरेमनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है भाई. चलो भाई, यही है. मैं वही बोल रहा हूँ भाई कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, अब देखो जियो सिनेमा पे देखा, मतलब वो एक्सपीरियंस भी नहीं समझ में आ रहा भाई अभी. सच बता रहा हूँ, लिटरली सेइंग, आई एम लुकिंग एट द पैनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड द वे दे आर कवरिंग. भाई अगर इस तरीके से दे आर गोइंग टू डू इट फॉर द फर्दर गेम्स, देन गॉड ब्लेस यार. फिर तो गॉड ब्लेस वाला सीन है. सो वी विल सी हाउ थिंग्स गो. जैसा मैंने बोला भाई, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. कुछ लोगों को और भी शेयर कर देता हूं मैं. जो ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लेंगे, जो नहीं आ सकते भाई कोई दिक्कत नहीं है. चलो भाई, वर्ल्ड कप आ रहा है वूट पे गाइस. सॉरी, वूट पे नहीं आ रहा, जियो सिनेमा पे फ्री है.
जियो सिनेमा पे फ्री है भाई, टीवी पे डालना है टीवी पे डाल लो, नहीं डालना है मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। वूट से भाई स्पोर्ट्स 18 भी हटा दिया है वूट के पैसे ले लिए और वर्ल्ड कप हटा दिया वहां से। जियो सिनेमा पे फ्री है भाई, फुल कवरेज। संजय भाई दोनों में से किसी पे नहीं है, वूट सिनेमा पे भी नहीं है और वूट पे भी नहीं है और सोनी पे भी नहीं है। मैं बता देता हूं भाई, जियो सिनेमा, जियो सिनेमा पे फ्री है भाई, टीवी पे डालना है टीवी पे डाल लो, फोन में डालना है फोन पे डाल लो। यस, जियो सिनेमा। स्पोर्ट्स 18 सिर्फ टीवी पे आ रहा है, स्पोर्ट्स 18 सिर्फ टीवी पे आ रहा है, उसके अलावा और कहीं नहीं आ रहा। अगर जब तक तुम लोग यहाँ पे हो यार, तो मैं एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ कि भाई आए हो तो वर्ल्ड कप का टाइम है, वर्ल्ड कप का जब टाइम है तो वर्ल्ड कप के टाइम पे वाई डोंट यू नो, जो मैं हमें कि भाई अपनी जर्सी अपनी जर्सी का क्यों नहीं। सो गाइस, obviously as usual the video is sponsored by Sporticos, so make sure that you click the link in the description। भाई लिंक पे जाना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हारे पास मौका होगा कि भाई तुम जर्सी जीत पाओगे, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, यस फ्री है भाई वूट के वाले ही पैसे ले लियो, बट जियो सिनेमा फ्री है। बट यस स्पोर्टिकोस मत मिलो भाई, यहाँ पे भी तुम्हें फ्री में जर्सी मिल सकती है। बहुत सारे एडवांटेजेस है, लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करो और मेक श्योर कि भाई अपने पसंद की जर्सी तुम्हें मिल जाए, क्योंकि भाई आप सबको तो मैं गिव अवे नहीं दे सकता ना, तो स्पोर्टिकोस से यू कैन हैव योर ओन। भाई स्पेन ने बहुत दर्द दिए हैं यार, एज अ जर्मनी फैन स्पेन ने बहुत सारे दर्द दिए हैं मेरे को। सो नेवर स्पेन, नेवर अर्जेंटीना, ठीक है। बट यस whoever wins, वही वाला बात है भाई, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट टेकिंग जर्मनी एज द फेवरेट्स। मतलब मैं उनको सेमी में भी नहीं देख रहा, मैं उनको सेमी में भी नहीं देख रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो लक्ष्य भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। अरे भाई मेरे को लिंक शेयर करना था, चलो करता हूँ उसको आराम से। सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नेदरलैंड्स ऑलवेज, बट दिस टाइम ब्राजील इज द कॉल फॉर मी। चलो भाई, भाई भैया लक्ष्य भाई वेलकम टू द स्ट्रीम यार। भाई देखो नेदरलैंड्स का वही है ना, नेदरलैंड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई एम थिंकिंग इज, कुछ टीम्स हैं यार जिसके अगर मैनेजर डिफरेंट होते तो शायद दे वुड हैव हैड अ बेटर चांस, ठीक है। अगर उनके मैनेजर्स डिफरेंट होते तो उनका चांस ज्यादा होता। दैट्स व्हाट आई फील, मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलूंगा, बट दैट्स व्हाट आई फील कि अगर मैनेजर समवन लाइक साउथगेट अगर नहीं होता, साउथगेट नहीं होता, लुई वैन हाल नहीं होता, सो आई थिंक दे वुड हैव better chances of doing better things. Portugal are not dark horses for me, Simon. They are definitely one of the favorites. When it comes to dark horses, you can go this time for someone like Germany or someone like Netherlands. Netherlands, is in the mix as well. Someone like Denmark as well. But Portugal, you cannot take Portugal as a dark horse. नहीं भाई, मुझे नहीं लगता. I don't see that happening from the way. Welcome to the stream. But let's see. Qatar will win. Bhai, I won't be surprised. ब्राजील वर्सेस पोर्चुगल फाइनल। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, सबके अपने अपने भाई आके यहाँ पे व्यूज ही देने हैं अपने, सबके अपने अपने फेवरेट्स है। एवरीवन वांट्स अदर्स, उस तरीके से कि भाई किसकी कौन सी फेवरेट है। भाई मैंने जियो सिनेमा ही लगाया था, अटक तो रहा है, टीवी पे अटक रहा है, फोन पे चला के देखो भाई। ब्राजील वर्सेस यार फ्रांस का वही बोल रहा हूँ ना, बेंजिमा के जाने के बाद नाउ दे आर इन अ बिट ऑफ अ मेस, ठीक है। बेंजिमा के जाने के बाद नाउ दे आर इन अ बिट ऑफ अ मेस। हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश सब में अवेलेबल है भाई। अटक रहा है भाई। ब्राजील भाई फेवरेट है। सुनील भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। ब्राजील फेवरेट है, गोज विदाउट सेइंग। 100% यार। अगर इस बार ब्राजील नहीं उठाएगी तो भाई कभी उठाएगी। इंग्लिश भाई सोल कैम्बल बैठे हैं भाई,
alongside वेन रूनी. इंग्लिश वाले पे अगर जाओगे यू विल सी सॉल कैम्बेल एंड वेन रूनी. भाई ये जियो सिनेमा को ट्रैफिक की आदत नहीं होगी ना भाई. ऑल ऑफ अ सडन इतने लोग आ जाएंगे तो क्या बोलोगे. उरुग्वे डेफिनेटली. अजय क्या वहां पे ना every time Uruguay goes with a very very good attacking force. Defensively they have few old guns but still भाई इनको आदत नहीं है भाई. इनको कोडिंग सुधारनी पड़ेगी अपनी. ब्राजील अर्जेंटीना विशाल भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं बोलूंगा बट बेंजिमा के होने से डेफिनेटली फ्रांस मच स्ट्रॉन्गर. सिमोन इज सेइंग इंग्लैंड टू रीच सेकंड राउंड और क्वार्टर फाइनल. Definitely quarter final. If England is not reaching the quarter final with this team, they should stop playing football. They should stop playing football if they are not reaching the quarter final with this team. ये तो हो जाएगा संकेत भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. He will sign a new deal. फ्री वे देखो पता है क्या है. The thing with England is if they just come out of their shell, if Southgate is like, all right guys, go out and attack, they are definitely one of those teams who will excite everybody. भाई ओपनिंग सेरेमनी सूरज भाई is going to start very very shortly. मैं ठीक. संदीप भाई, संकेत भाई, how are you? Rooney should sit with Ronaldo. पोर्चुगल बोल रहे रोहन भाई. मैं वही बोला देखो, I will never underestimate England because they have the players. It's just the manager who is a clown. When you have a clown manager, you are not going to win a lot of things. Because वो mentality नहीं है भाई. वो mentality ही नहीं है. You have to go killer instinct. World Cups. ये अभी भी सोच रहा है भाई 3 at the back, 2 CDMs, आगे Kane. It's not gonna work. You will have to take your chances. You will have to go all out in order to get that trophy home. Otherwise you're not bringing that trophy home. सिंपल सी बात है. मैं देखो मेरी every time my team, if there is no Germany, I don't support anybody. I obviously don't want Argentina to win. But yeah, that's it. Guys, 20 seconds for the opening ceremony to start. It's gonna start very very shortly. The team news. I have not seen the team news, so let's see. This time no. चलो विशाल भाई, मैं वही देख रहा था कि आज आपका रिन्यूअल वाला आया था मेरे पास. I saw the name in your I saw your name in the list आज सुबह. फिर मैंने सोचा चलो इस बार रिन्यूअल में कोई दिक्कत नहीं आई. समझे भैया, there are already allegations, and I won't be surprised. For them 10 million is nothing. तो उन्होंने अगर इक्वाडोर को दिया है, for them it's like their life is settled. So I won't be surprised if there are a lot of allegations that comes out in the end. भाई टीवी पे आ रहा है स्पोर्ट्स 18 पे. गाइस सुन लो, टीवी पे स्पोर्ट्स 18 पे आ रहा है. फोन पे देखना है जियो सिनेमा पे आ रहा है. वूट और सोनी पे नहीं है. गाइस. तो वूट और सोनी पे टाइम वेस्ट मत करो भाई. यंगेस्ट भाई आई एम गोइंग विथ मुसियाला यार. यंग प्लेयर में आई विल गो विथ मुसियाला. या इट्स गोना स्टार्ट वेरी वेरी शॉर्टली यार. कतार विल विन टुडे. भाई इजी तो नहीं करेंगे. इक्वाडोर प्ले वेरी टफ फुटबॉल जो बोलते हैं ना, एंड दे हैव वेरी गुड मिडफील्डर्स. सो इक्वाडोर इजी तो नहीं करने देगी, बट हाँ विथ होम सपोर्ट एंड विथ there are allegations. I am not saying it's 100% true, but there are allegations. भाई देखो Southgate, England will only win something with this team if they don't have Southgate. Simple as that. My team is always सूरज भाई जर्मनी होती है मेरी टीम. चाहे वो पहले राउंड में बाहर हो जाए, चाहे वो कहीं पे भी हो जाए. वही है भाई, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जहां पे भी देखना है देख लो. मैं वही समझी. देखो ना, पता है क्या हुआ. They took the money for Wood
दे टुक द मनी फॉर वुड और उसके बाद वुड से स्पोर्ट्स 18 हटा दिया, वैनिश्ड। अब देखो भाई, वर्ल्ड कप का ओपनिंग सेरेमनी देखना है तो तुम्हें या तो जियो सिनेमा पे देखो या तो टीवी पे लगा के टीवी पे सब्सक्राइब करो वुड, सॉरी ये स्पोर्ट्स 18। स्पोर्ट्स 18 इज नॉट इवन ऑन डिश टीवी, एयरटेल पे है भी नहीं अभी वो। भाई बीटीएस आ रहा है बिल्कुल यार। Maguire has been the best defender for England for the last 3 years. That's total. It's total agenda. If you think he's not performing for England, he has been England's best defender for the last 3 years. Him and Shaw, one of the reasons that England reached, the finals of the Euros. They were the reasons they reached the semi-finals in the World Cup. So. ये भाई देखो, यही है ना, ये थोड़ा ये होता है हमेशा ये होता है हमेशा, बट इसको इससे रिलेट करके देखोगे तो यार क्या ही बोल सकता हूं मैं। भाई स्टार्ट हो गया, इट हैज स्टार्टेड, इट हैज स्टार्टेड। भाई वुड को तो सू तो करना चाहिए यार। भाई देखो फॉर यूनाइट, भाई देखो इंग्लैंड में इतना सपोर्ट मिलता है ना उसको, व्हेन यू लुक एट द पीपल अराउंड हिम, 2 सेंटर बैक्स अराउंड हिम, 2 CDMs आगे, सो ही गेट्स लॉट ऑफ कंफर्ट इन डिफेंडिंग, जिसको बोलते हैं। 2-0 says Simon, all right, let's see. भाई अटक तो रहा ही है यार जियो सिनेमा के। भाई तुम्हें लग रहा है जियो सिनेमा पे अटकेगा नहीं? जियो सिनेमा की हालत खराब हो रखी है भाई, इतना क्राउड हैंडल ही नहीं होगा, इतना क्राउड हैंडल ही नहीं होगा इनसे, क्या ही बोलूं। और Simon says England for Iran 0, USA 1, Wales 2, all right. Somebody, I don't see England losing versus Iran, but let's see. It's football, anything is possible. So 2-1 to Ecuador, all right. सारे इक्वाडोर के साथ जा रहे हैं भाई साहब। ये हो गया ना, तो शायद एलिगेशंस जो है मनी वाले एलिगेशंस, वो शायद थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाए, बट इतनी आसानी से नहीं जाएगा। भाई पैसा हो तो किसको नहीं बुला सकते यार। When you have money, you can call anybody. Prithvi bhai, I already talked. I already said Jamal Musiala. Guys, what do you think? What do you think? World Cup talent pick this year. I am going with Jamal Musiala. Guys, 15 people with me right now. What do you think? Young talent who you think will shine in the World Cup. I am going with Musiala यार. I am going with Musiala. अरे भाई सस्ते नशे का कोई जवाब नहीं है ना भाई सस्ते नशे का कोई जवाब नहीं है। Somdeep says Ecuador 5, Qatar 0. All right. Somdeep is in no mood. कोई कतार को बख्शने के मूड में नहीं है भाई सीरियसली यार क्या ये बोलूं, it looks totally different यार। और अटक गया तो चल भी नहीं रहा भाई, जियो सिनेमा तो अटक सा गया। अब्दुल करीम टेलर, अरे भाई साहब गाइस, स्पोर्टिकोस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, मैं पहले भी बता चुका हूं। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ चांस टू विन योर ओन जर्सी। अडेमी हो सकता है भाई, डेफिनेटली। सिमोन सेज guys were to score twice for Wales, transfer on the score sheet. All right. Iran defensively,
they are very, very good. But yeah, scoring 5 goals, I don't think it's gonna happen. So let's see. Bellingham. Suraj Bhai is going with Bellingham. 100%. You know, Samdeep, the moment they were awarded the World Cup, that's it. You know, they should not have been awarded the World Cup, but here we are. Just look at the training videos that England have put. जो इंग्लैंड ने ट्रेनिंग के वीडियोस डाले, just go out and look at the videos. You know, it's absolute, मतलब they are literally like वो सामने में खड़े होके ना, they are. So obviously बात है advantage to South American teams, but you have to play, simple as that. भाई मोबाइल पे तो एटलीस्ट बफर हो रहा है, टीवी पे तो चलना ही बंद हो गया. For the golden boot, toss up between Kane and Messi. All right. If they perform the way they are performing, definitely. That's the area that's bothering me if I'm looking at as a Brazil fan. You know, if you ask me as a Brazil fan, I am not a Brazil fan. I'm just saying. But as a Brazilian, if I'm looking at Teles and Alves, then I am in problem. भाई स्पोर्ट्स 18 में लेने गया था, बट डिश टीवी पे है ही नहीं यार. डिश टीवी पे है ही नहीं. टीवी पे तो चलना बंद हो गया यार. सबको इशू आ रहा है. Italy to win the World Cup. भाई जियो सिनेमा पे ही अटका था, बट अभी मैं देखो यार, मेरे को ना whenever there is a, जिसको क्या बोलते हैं यार, ओपनिंग सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं होता है सच. भाई फीफा के प्रेसिडेंट को छोड़ो ना यार. हु लिसन्स टू फीफा प्रेसिडेंट? कोई नहीं. नो वन. Trippier can play that role. Right? Trippier can play that role. He is a right back, he is a left back. Chilwell chala gaya, James chala gaya. Obviously, disadvantage England in that. By the way he talks, most probably it's his last World Cup. बंदे की longevity यार बाकियों जैसी नहीं है. You know, when you look at someone like Neymar, he is not someone like Zlatan or someone like, you know, Rooney तो चलो यार, Rooney का भी हो गया था उस टाइम तक तो, like Ronaldo and Benzema, or even the likes of Lewandowski or Messi, you know, तो है नहीं वो hunger नहीं है भाई. He has a lot of money, you know, he could win some trophies with PSG, most probably. Champions League is this year one of the contenders, you can say. Same with Brazil. So both the competitions, they are the contenders. Neymar can end this year with World Cup as well as Champions League. So that's how it is at this point of time, you know. So I am not going to say that he has no chance, but for me, I do feel personally that this is the last World Cup for him. You know, personally, I feel that that's the last World Cup for him. No, they won't. They have already accepted to, you know, bribes and everything. Simon, they have already accepted basically that, you know, giving Qatar the World Cup was a wrong decision. So they have learned their lesson, but for how long, that's to be seen. You know, मेरी always Germany यार. मैं वही बोल रहा हूँ, जियो सिनेमा से अच्छा भाई डीडी उस पे आता था. ये तो बॉन्ड डाइवर है. Sandeep bhai, he is a bond diver. Yes, Benzema is out, guys. Nkunku is out. So yeah, France definitely in the mud for the time being. You know, France definitely in the mud for the time being. Yeah, we have our opinion. I think it's absolutely rubbish decision. You know, I think it's a rubbish decision, but yeah.
भाई इसे कहाँ नहीं है सीडीएम, वर्ल्ड का बेस्ट स्टेडियम जर्मनी में है भाई, जोशुआ किमिश। अब वही है कि अब जर्मनी में उसको खिलाते क्या है, उसको राइट बैक पे भी खिला देते हैं, उसको सीडीएम भी खिलाते हैं, गोरेत्स्का एंड किमिश इन द मिडफील्ड, वर्ल्ड क्लास। मैं वही बोल रहा हूँ, फ्रांस के पास डेप्थ है, बट यू कैन नॉट रिप्लेस समवन लाइक बेंजेमा, France, when we look at France, they have the depth, they can go the distance, but फिर वही है कि you cannot, get someone like replacement for someone like Benzema. कोई बेंजिमा का रिप्लेसमेंट तुम ऑल ऑफ अ सडन लेके नहीं आओगे, तुम्हारे पास उस तरीके का कोई बंदा नहीं है कि बेंजिमा के गोल्स जो है वो हटा दे, कर दे, मतलब आके उतने सारे। वो तो हमेशा चलता है भाई, भैया संदीप भैया, वो तो हमेशा चलता है, वो तो होता ही है। Without Benzema, now I doubt. Yes, Muller is there यार। भाई इंडिया अभी उस टाइम, at this point of time we don't have that much money that we can invest. हमारे पास कुछ स्टेडियम्स हैं, but Qatar has basically pumped in almost 200 billions infrastructure में। Obvious सी बात है, they are looking at the future, but even with looking at the future भाई 200 billion का infrastructure, I don't think they are going to use it properly. They are going to use it properly. Like Kimmich is a professional. Kimmich is a professional. He goes out and he does his job every week with Bayern Munich. He will do what the manager wants him to do with Germany as well. Yeah, he is done here, Simon. We have already talked about it, and that's why I'm not going to talk about it. I think he's done here. If they can get Muller fighting, and somehow can hold their defense, the wingers, the playmaker, and the midfield, they have a lot of good players. Good decision भैया, जो भी बोल रहा है good decision. I don't have any words for them, to be very honest. And as they don't have that many people who will be attending the football games. Even a 40,000 stadium, even a 40,000 seater stadium, it's not gonna be filled. मैं तो भी नहीं देख रहा, मैच के टाइम पे लगाऊंगा। मुझे, as I said, I have no interest in watching opening ceremony में मेरे को इंटरेस्ट रहता नहीं है सब। मैं एक बार फोन पे भी चेक कर लेता हूं भाई, एक सेकंड रुक जाओ। Give me 1 minute guys, give me 1 minute. I am checking it on the phone as well. मैं एक बार फोन पे चेक कर लेता हूं, तब तक भाई लाइक करते जाओ, स्पोर्टिकोस के लिंक पे जाके क्लिक करो, खाली नहीं बैठना है, स्ट्रीम शुड बी ऑलवेज बी फन। रमानी भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। बिल्कुल यार, देखो एक होता है ना, व्हेन यू हैव सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, and you build something जहां पे लोग उस तरीके से आए, तो एक कल्चर अपने आप ही निकल के आता है। एंड वी ऑलरेडी हैव अ वॉचिंग कल्चर। हमारे पास जो है वो स्टेडियम्स में जानने का कल्चर, अपार्ट फ्रॉम फ्यू सिटीज, वी डोंट हैव दैट। एड दिखा रहा है भाई अभी जियो पे एड दिखा रहा है, रुको भाई फोन पे सही से चल रहा है, फोन पे बिल्कुल सही चल रहा है, फोन पे नहीं रुक रहा, इट्स ऑन द टीवी, दैट्स इट स्टॉपिंग। फोन पे इट्स वर्किंग परफेक्टली। It's very, very difficult, Simon. 4 years is a long time. 4 years is a long time with injury issues and everything. You have so many things that goes out of fashion. Basically you can say that. When it comes to players, look at the team that France had in the previous World Cup. They don't have Kante, they don't have Pogba. They tried Benzema this year, but now Benzema is gone as well, and Nkunku is gone as well. So many injuries, and अटक रहा है भाई। जियो सिनेमा पे इनके पास
they don't have that capacity कि इतना crowd handle कर ले. जियो सिनेमा भाई इतने एक बारी में देखता कौन होगा? कोई नहीं. Exactly. I think more people will arrive with other countries. When you look at Ecuador, I don't think even 5,000 people travel from Ecuador for the World Cup. I don't think even 5,000 people traveled to Ecuador from the World Cup. So it is what it is, man. At this point of time, चलो भाई, team news जो है World Cup की पहले game की. Let's have a look at that. Hopefully भाई, उम्मीद ही कर सकते हैं और क्या ही बोलूं मैं. अभी वर्ल्ड कप की पहले आई नहीं है भाई. घोस्ट ऑफ अर्जेंटीना. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्ट्रीम. भाई अब जर्मनी नहीं जीत रही तो कोई भी जीते यार. द मोमेंट जर्मनी विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मेरा इंटरेस्ट भी टूर्नामेंट से खत्म. आई वॉच द वर्ल्ड कप जस्ट बिकॉज जर्मनी इज इन देयर. सिंपल एज दैट. Guys, tomorrow I will try for the Senegal versus Netherlands game. I think it's gonna be a good game. So कल 9:30 बजे का गेम है, उसके हिसाब से I will put up चलो भाई अच्छा हुआ फिर तो मेरा टीवी रुक गया है. अगर BTS परफॉर्म कर रहा है तो अच्छी बात है. My TV is not working. थोड़ी देर जियो सिनेमा ब्रेक ले ले. They can take a break for a while. Simon, they have made certain changes. Guys, there are certain changes that's been made for the World Cup as well. That now with offside calls, the linesman, he will get a buzzer on the phone. Now for the offside call, the linesman will get a buzzer on the phone. So till the time he is not getting any buzzer, he doesn't have to, pull up his flag. Simple as that. भाई उनके ड्रेसिंग है यार, उनका कल्चर. आई वोंट से एनीथिंग वियर्ड यार. फॉर मेनी वी आर वियर्ड द वे वी ड्रेस, सो इट्स फाइन. भाई अंबानी का पैसा है भाई. अंबानी का पैसा के सामने सोनी थोड़ी टिकेगा. आई डिडंट नो ईदर सीलियर. There are a lot of things we don't know about the World Cup. So guys, now as I said, we have a new rule for this World Cup, that the offside call, the referee will get, the linesman will get a buzzer on his watch. So I think that's a very, very good technology that they are finally putting it in the game. Performance has been amazing apart from the sword waving. It was always going to be there. It's a part of the culture, Celia. So yeah. हाँ अरवीर भाई, सारे गेम वहीं पे आएंगे. Guys, the game is not on Woot. It's not on Sony. Either you watch it on Jio Cinema or you watch it. Simple as, on the TV or wherever you want to watch. It's either Jio TV or you go with Sports One. All right, so BTS is performing at this point of time, as guys already mentioned it. जी भाई साहब, नयन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. बिल्कुल सही सुना है भाई साहब. इस बार का आईपीएल भी जो है वो इसी पे है, जियो सिनेमा पे. सो गाइस, जियो धन धनाधन. मैं देखो जीतता कौन है. नोड़ा फतेही बिल्कुल यार. सही है अरवीर भाई, बढ़िया. मेरे आई थिंक वन है को दिखा नहीं. सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स. बट अब जो चैनल पे आएगा भाई, अब वही करना पड़ेगा ना, क्या ही कर सकते हैं. Guys, from this week I will start putting up shorts 1 minute ke. With information about the game, with information about United, with information about
other things which is not that easily available with the research and all, because मेरा काम ही उसी में है भाई. So obviously keep an eye on that. At this point of time, Morgan Freeman is in the ground. ब्राजील और पोर्चुगल भाई मोस्ट लाइकली यही दोनों है. अर्जेंटीना डेफिनेटली. भाई देखो, टीवी के राइट्स एंड ओटीटी राइट्स दोनों डिफरेंट है. टीवी एंड ओटीटी दोनों ही डिफरेंट है. सो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. टीवी एंड ओटीटी दोनों ही डिफरेंट है. सो भाई आईपीएल जो है वो टीवी पे आएगा स्टार पे ही. बट व्हेन वी लुक एट सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है. एंड शाश्वत भाई फटाफट मेंबरशिप आनी चाहिए 4000 होने पे. और गाइस, वी आर मूविंग अहेड. 4000 is done, but our journey, we have set up a target. Obviously we don't know whether it's going to happen or not. 10,000 का टारगेट रखा है by the end of the season. I am not going beyond, कि भाई अब 4 से मैं सीधे 40 का सोच लूं. But I will be adding few other content as well, trying to reach 10,000 by the end of the season as well. So, Nayan, to be very honest, Belgium had their moments. Don't get me wrong. I am not here to stop anyone from supporting anyone, but I think Belgian players, they have run their course. Unless or until they change dramatically, I don't see them winning the World Cup, to be very honest. चलो सही है भाई. It will be in English and Hindi. OTT पे तो English, Hindi, Tamil and Malayalam. I think these are the 4 languages. But on TV, I think it will be English. When we look at the likes of Belgium, the chances they had with Euros, 2 years back, not this year. This year they already had washed out players. But before that, when they almost lost to Japan, and then they got knocked out in the next round. So, Dishant bhai, welcome to the stream. देखो, नेमार के पास यही मौका है दिशांत भाई. This is the best chance for Neymar. He can get the World Cup. If everyone keeps their head calm at PSG, they can lift the Champions League. And it's an easy Ballon d'Or for him. But it can go terribly wrong as well. So, it's football, you never know. But I think, as you said, I do feel that this is the best chance for Neymar as well. By the end of the season, like by the end of next month, he might be a World Cup winner. By the end of the season, he might be a Champions League winner with PSG. So, but yeah, as I said, it totally depends. On whether he can, whether PSG can keep their calm collectively. That's where it all comes down to. Early predictions for Golden Boot. I know Ronaldo is not in the best of forms. He has talked rubbish. But definitely Ronaldo, Messi, and Kane. These are the 3 guys I'm going with. Ronaldo, Messi, and Kane. Ronaldo, I will never count out in a big tournament. And with the supply line that Portugal have, oh my God, So even if he's missing chances, he might end up with the trophy. So, भाई मेरा डिश टीवी है. डिश टीवी तो शायद एयरटेल का ही है ना. मैं एक बार ट्राई करता हूँ भाई. मैंने चैनल खोला था, रुक जाओ, मैं सामने ही बैठा हुआ हूँ. मुझे शायद 1 मिनट लगेगा. देखो मेरे पे ये दिखा ही नहीं रहा. मेरा डिश टीवी है भाई. डिश टीवी पे नहीं है ये अभी. ये डिश टीवी पे नहीं है. यस 18 को है भाई फाइनल. मार्टिनेज. मैं भाई मुझे नहीं लगता बट ही कैन बी. अगर पोटेंशियल पे खेल जाए और उसके अकॉर्डिंगली टीम खेले तो he will definitely be banging in goals.
ऐसे तो फिर जूलियन अल्वारेज को भी डाल सकते हो उस तरीके से। केशव भाई फायर स्टिक का कोई आइडिया नहीं है भाई। डिश टीम में सामने में खोल के बैठा फाइनल। रुक जाओ यार, रुक जाओ, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। चलो इस गेम के बाद देखता हूँ यार, कुछ एरर आ रहा होगा, कुछ एरर आ रहा होगा तो मैं इस गेम के बाद देखता हूँ, इस गेम के बाद देखता हूँ समीर भाई। ऑलराइट, साने और गप्को यार, व्हाई नॉट। वैसे यार इस कॉन्वर्सेशन में वी कैन आल्सो पुट इन ब्लाहोविच। अमित भाई वेलकम टू द स्ट्रीम यार। 100% फेवरेट अमित भाई। अर्जेंटीना को डार्क हॉर्स नहीं बोल सकते यार, अर्जेंटीना को डार्क हॉर्स नहीं बोल सकते। आफ्टर क्वाइट अ व्हाइल Argentina is going into a big tournament as favorite, big tournament as favorite, 100%. Amit bhai, I think it's a huge loss. ये बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ा लॉस है for France, because if you look at the way France have set up their team in the last year or so, he has been a huge part. He has been a huge part. भाई हाँ, अटकना बंद हो गया। 45 मिनट्स में गेम चालू होने वाला है भाई। 45 मिनट्स में गेम इज गोइंग टू स्टार्ट। भाई आप बढ़िया चल रहा है, इट्स नॉट लैगिंग नाउ भाई। दे हैव अ रियली गुड स्क्वाड। इफ यू लुक एट द स्क्वाड फॉर अर्जेंटीना, दे हैव अ रियली गुड स्क्वाड। एंड देखो, मैं यहाँ पे बायस्ड होके बात नहीं करूंगा। एज आई सेड, आई डोंट लाइक अर्जेंटीना, आई डोंट वांट देम टू विन, बट जो भाई है सो है, दे आर गोइंग डेफिनेटली एज द फेवरेट्स। At this point of time, the manager has said they will not call a replacement. At this point of time, Deschamps has talked about no replacements. And guys, while you are here, check out Sporticos and make sure that you have a chance to win your own jersey. In the meanwhile, also check out the membership of the channel. That would help the channel a lot. And hit that bell button so that you don't miss out on any video. Oh yeah, totally depends on how Martinez starts, Nayan bhai. If he starts very, very well, he stays with the team. Obviously, he will be the starter. Julian Alvarez is not a sure shot starter. Martinez is. But if he's not performing, then definitely I think Alvarez is a more than able deep who can just come in. What do you think? I have given three names. Any one of those, I think they can have it. Kane, Messi, and Ronaldo, in my opinion. Ronaldo will be in the list. He will be in the mix for sure. Qatar will go to, most probably they will. There are talks of Martial going, but Deschamps came out and he said he don't want any replacement. He don't want any replacement. So I don't think Martial is going. 100% भाई। ये तो भाई पता ही है, Romero is definitely there, but why Otamendi is starting, I have no idea. नहीं होगा भाई, नहीं होगा। इतनी जल्दी एशिया को वापस नहीं देंगे, इतनी जल्दी एशिया को वापस नहीं देंगे। I don't see big upsets, to be honest, at this point of time, Amit bhai. In the group stages, I don't see a big upset. We have a group of 32, but I don't see any big upset at this point of time.
इंडिया कैन प्ले बाय 2034 नहीं भाई, वी नीड ड्रास्टिक मेजर्स, हमें ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। सिर्फ बैठ के बोल देना कि भाई 2034 में हम वर्ल्ड कप खेल लेंगे, ये नहीं होने वाला भाई, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यस, इंग्लिश वाले पे है, इंग्लिश वाले पे है अजय भाई, he and Sol Campbell, he and Sol Campbell. You know, that's what I'm saying, that you can have any team get knocked out. You know, we have seen a lot of, even Germany after winning the 2014 World Cup, 2018 gone in the first round. But at this point of time, when I look at the groups, it's more, you know, I don't see much happening in terms of you know, a big upset. I think it's very, it might get a bit close in some groups, but majority of them, I think there are two clear choices which you can see when you look at the paper, to be very honest. भाई होस्ट कर सकता है, होस्ट करेगा तभी इंडिया खेलेगा। You know, we are very far behind from even the likes of Japan and Korea भाई। You know, हम यूएई को नहीं हरा पाते, हम यूएई को नहीं हरा पाते। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई हम 2034 में जो है ना ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप खेल लेंगे। आई डोंट थिंक सो यार, मुझे नहीं लगता। एग्जैक्टली, इट्स अ ड्रीम, ये हर इंडियन का ड्रीम है भाई, हर इंडियन का ड्रीम है, एंड दैट गोज फॉर एवरी फुटबॉल, यू नो, अडोरिंग नेशन। यार हम फुटबॉल अडोर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हेन यू लुक एट इंडिया, द नंबर ऑफ फैंस, यू नो, for the Premier League, for Serie A, for La Liga, we have lot of people who watch football with, you know, like, oh, everything. But when it comes to looking at and supporting our own ISL, भाई मैं खुद नहीं उस तरीके से करता, मैं दूसरे को तो नहीं बोलूंगा, because the quality is not there. और जब तक तुम क्वालिटी लेके नहीं आओगे लीग में, you cannot expect people to go out and, you know, watch the games week in week out. Simple सी बात है, you will have to bring quality. You know, you will have to bring quality, otherwise it's not going to happen. मैं हरवीर भाई, मैंने डिश टीवी पे मैंने ट्राई किया वेबसाइट से, बट हुआ नहीं, मैं मैच के बाद देखूंगा। इंजरी तो भाई हर किसी के साथ इशू है अभी अर्कोजीत भाई, इंजरी इज अ इशू फॉर एवरीवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई। ऑलमोस्ट और कर देना, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। और वंस इन अ ब्लू मून अगर तुम कर भी देते हो तो क्या फायदा भाई, वंस इन अ ब्लू मून अगर कर भी दिया तो दैट काउंट्स फॉर नथिंग। चलो भाई, देखते हैं अमित भाई whether he can produce the magic or not, but for me definitely he is definitely in the mix. He is definitely one of the, you know, prime contenders for the golden boot for me as well. भाई ऐसे तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यार नहीं, मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भाई, नेट से वो हो नहीं रहा है यार, दिक्कत ये आ रही है। रुको मुझे ट्राई करने दो, लेट मी ट्राई अगेन। एक बार फिर से ट्राई करता हूं, बट यू नो मुझे दिखा नहीं, ये आया क्यों नहीं भगवान जाने। आई एम ट्राइंग अगेन, वेट, आई एम ट्राइंग अगेन। तुम्हारे आप लोगों के सामने मैं फिर से डिश टीवी एड-ऑन्स में मैं कर लेता हूं भाई, देखता हूं एड-ऑन्स में होते हैं या नहीं। चैनल नंबर 645 मैं ट्राई करता हूं अभी। चलो मैं इस मैच के बाद ये मैच तो कर रही हूं, बोल रहा हूं भाई कि यू ने बेस्ट जियो सिनेमा की तो लगी पड़ी है भाई। कोई बात नहीं अर्कोजीत भाई, थैंक्स अ लॉट। अरे भाई साहब भाई कुछ इशू है, मैं ट्राई करूंगा कि भाई, अदरवाइज जिस तरीके से दे आर शोइंग, उसमें तो भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई। स्पोर्ट्स 18 भाई नहीं है, टीवी पे भले ही हो, बट यहाँ पे वेबसाइट से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट वेबसाइट से ऐड नहीं हो रहा।
चलो भाई लॉग इन करके देख रहा हूं मैं, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। केवल ऑपरेटर को कॉल करूंगा बाद में भाई, ये गेम के बाद। कल अच्छे गेम्स है, कल के पहले आई विल ट्राई किया हो जाए। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ यार, मेक श्योर कि भाई बाकी लोग भी आए चैनल पे, दे ऑल्सो वॉच इट। ये तो अलग ही ड्रामा चल रहा है भाई, इनके साथ लॉग इन हुआ बट फिर भी ये बोल रहे लॉग इन नहीं है। छोड़ो हटाओ, बाद में करूंगा। भाई मैच 9:30 बजे से है, सीरियसली। मैं कल कल कॉल करूंगा भाई, कल कॉल करूंगा। कल के गेम्स दोनों अच्छे हैं। एक तो मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई विल बी बिजी विद द वर्क, अदरवाइज तो भाई मैं करता ही दोनों। डिश टीवी का अलग ही रोना चल रहा है भाई, डिश टीवी का अलग ही रोना चल रहा है। मैं इसको बाद में ट्राई करूंगा, एज आई सेड आई विल ट्राई दिस लेटर। तो भाई टीम की न्यूज मैं बता दूं, दोनों टीमों की। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है तो भाई सामने में ही दिखा देता हूं ना यार। एंड गाइस बिफोर आई पुट डाउन स्पोर्टिकोस, चलो भाई वी शुड हैव अ लुक एट बोथ द टीम्स, ठीक है? क्योंकि भाई बहुत कतार के तो यार बहुत सारे प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता है किसी को। ऑनेस्टली स्पीकिंग कतार के बहुत सारे प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता है किसी को। इक्वाडोर के तो फिर भी पता है। चलो भाई देखते हैं। ये वैन हाल तो भाई पागल ही है, छोड़ो। कौशिक भाई ये देख लो भाई, ये है टीम न्यूज। मैं अब स्क्रीन पे ला रहा हूं, मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं। ये लो, दिस इज द टीम, दिस इज बोथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो काइसेडो, मेंडेस, you know, इनकी मिडफील्ड, they are going to play a huge role. Stupian we all know, Ibarra we all know, Enner Valencia is still there. Enner Valencia भाई अभी भी खेल रहा है। मुझे भी लगा था बट ऐसा हुआ नहीं भाई। भाई कतार में लुक एट देखो भाई, you know, if you are born टू एनी कतारी पेरेंट्स, मतलब अगर पापा या फिर मम्मी में से कोई भी डजंट मैटर कि तुमने कतार में कभी पैड भी रखा हो या नहीं रखा हो, यू आर एलिजिबल टू रिप्रेजेंट कतार। और भाई दे हैव देयर शेयर, इफ यू विन दिस मेडल, यू नो, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा एंड ऑल दैट। तो ये उनका है जिस तरीके से दे आर अट्रैक्टिंग टॉप लेवल एथलीट्स। इफ यू लुक एट द स्प्रिंटर्स, इफ यू लुक एट द मैराथन रनर्स, यू नो, अफ्रीका छोड़ के, इफ दे हैव एनी thing that relates them to Qatar, they are moving to Qatar. भाई कल आज वाला मैच 9:30 बजे से है, कल वाला पहला मैच 6:30 से है, दूसरा मैच 9:30 से है। कल की बात कर रहा हूं मैं, आज के नहीं। भाई स्ट्रीम थोड़ा सा लैग हो रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है ना, हमारे यहाँ ये रूल नहीं है, हमारे यहाँ ये रूल, सिंपल सी बात है भाई। कल सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स, आई थिंक इट्स अ गुड मैच। सेम ईयर भाई, सेम ईयर। यहाँ पे जियो सिनेमा पे इंग्लिश वाले पे रूल नहीं दिख रहा है भाई। हमारे यहाँ ड्यूअल पासपोर्ट का कोई रूल नहीं है, ठीक है? सो प्रीवियसली, you know, Daniel Chopra, if you remember Daniel Chopra,
Daniel Chopra talked about moving to India and representing India, but Indian Footballers Association ने बोला कि भाई you cannot represent, you will have to give up your English passport. उसने बोला नहीं भाई, ये तो नहीं करूंगा मैं. रोनी ने बोला he supposed भाई a baller knows his ball. सिंपल सी बात है, उसको पता है भाई. इनके पास, जर्मनी के पास, अगर अगले 2 साल में एक अच्छा स्ट्राइकर क्लोजे लेवल वाला आ जाए, दे विल बी फेवरेट्स फॉर यूरो. अगर क्लोजे जैसा इनके पास एक स्ट्राइकर आ जाए तो मिडफील्ड सॉर्टेड है, विंगर्स सॉर्टेड है, स्ट्राइकर नहीं है. यार रैशफोर्ड, नैन भाई वही वाली बात है ना, रैशफोर्ड इज अ कॉन्फिडेंस प्लेयर. उसको मैनेजर कितना कॉन्फिडेंस देता है साउथ के, दैट्स गोना डिपेंड. उस पे बहुत सारी चीजें हैं. सो लेट्स सी वेदर ही कैन डू द जॉब और नॉट. भाई गेम स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, 30 मिनट्स में. वी आर गोइंग टू टॉक फॉर अ बिट मोर एंड उसके बाद भाई वी विल वॉच द गेम. कल वाले गेम का आई विल ट्राई. नेदरलैंड वर्सेस सेनेगल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गेम है यार. टुमारो 9:30, टाइम भी अच्छा है. और इंडिया के हिसाब से तो यार मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स आर एज अ वेरी वेरी गुड टाइम. सो भाई मेरा तो टीवी रुक गया है फिर से. ये जियो चल रहा है, रुक रहा है. आई थिंक दे विल सॉर्ट दिस आउट, बट उनको भी कोई आइडिया नहीं है. अब भाई रूनी इज टॉकिंग. इट्स ग्रेट टू सी यार, इट्स ग्रेट टू सी हिम. इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाला तो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किसको किसको बिठा लिया अपार्ट फ्रॉम रॉबिन सिंह. सो भाई they still have lot of players who can trouble you with pace वाले बंदे अभी भी उनके पास हैं. Obviously माने का loss is a huge loss, but they still have people who can go out and who can definitely get them out of their rhythm. Simple as that. लैग हो रहा है भाई, अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ है. इट्स लैगिंग. मैच शुरू होगा उसके बाद लैग करेगा तो भाई गालियां पड़ेंगी इनको. कि भाई अगर तुम्हारे बस का है नहीं तो तुमने किया क्यों. अगर तुम्हारे बस का है नहीं तो तुमने किया क्यों, तुम छोड़ देते भाई. ये चीज तुम्हें पहले फिक्स करनी चाहिए ना. इमेजिन यू आर बेसिकली हैविंग दिस प्रॉब्लम व्हाइल यू आर शोइंग इट. ये पहले तुम्हारी प्रॉब्लम होती तो नो वन वुड हैव केयर्ड. तुम्हारे एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लोग सही से नहीं देख पा रहे. एग्जैक्टली भाई, मैं तभी बोल रहा हूँ ना भाई, सो मेनी इंजरी इश्यूज, it will hurt a lot of teams. So but वही है, जिनकी लाइनअप डीप है भाई, they don't have anything to worry about. They have ample replacements. So भाई जो भी है यहाँ, इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस, whoever is out here, make sure that you subscribe to the membership. If you can take it, that would be great. That would help the channel. Perks देख लो, whatever you feel like it will help you, you can take that. We already have 60 members at this point of time, and hopefully the number keeps on increasing. वही मैं बोल रहा हूँ भाई. I will try, Samir bhai. 100% I cannot say because of the work and all, but I will try to get the bigger games most probably. Bhai, he's talking sense na yaar. मैं definitely I am putting him in the team because I feel he might do it. Rooney might be feeling he won't do it, so that's fine. बहुत सारे many people have already taken out Ronaldo of the context कि भाई उससे गोल नहीं लगेंगे. But the service that he will get with Bernardo, with Bruno, with Leao, Cancelo, Dalot, I won't be surprised if he is in the race. I am not going to say कि भाई वो जीत लेगा. Always, Arpajit bhai, that's why I said, guys, if you can take the membership, please do that. It starts at 89 per month.
So totally on you. Whatever plan you want to have, you can have it. And as I said, from the stage, so Jan bhai is here. Jan bhai, welcome to the stream. I have heard his name. Jan bhai, I have heard his name. Definitely gonna keep an eye. That's why World Cup is so great. You get to see the players who you have not, you have not. If not for the World Cup, you won't even go out and search their names. So always a chance to learn, always a chance to improve. So that's why it's a global competition, and that's why for someone like Caicedo, that's why I was talking about someone like Caicedo who's absolutely balling in Premier League, world's biggest stage. So every time pace is not everything, Zanbhai. You can be pacey, but then again, Adama Traore is pacey as well. Having pace is one thing. Do you have the end product? That's to be seen. Because even Traore, he can basically run you out of the ground. But then look at the delivery, look at the way he finishes. So it's not there. Try करूंगा आदित्य भाई, definitely. भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि if only he, get the changes going. वरना सिर्फ फ्रेंडली में खिला देना कोई बात नहीं है ना भाई. संजय भाई सिर्फ फ्रेंडली में खिला देना. If you are just making those changes in the friendly, it's not gonna matter. Friendly में कोई मैटर नहीं है. आदित्य भाई देखो, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. अभी इनको 1/10 दो, नेगेटिव में दे दो. At this point of time, we can only hope that they will make sure, the teams will make sure that football on the world, on the stage, on the pitch, that's gonna do the talking apart from other things, because that's something we are helpless about. भाई वही है, अगर वो उस तरीके से खिलाता है तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ फ्रेंडली में खिला देना इज नॉट द थिंग. फ्रेंडली में खिला के तो भाई फ्रेंडली में तो तुम कुछ भी आइडिया अपने इस्तेमाल कर सकते हो. एग्जैक्टली. इंग्लैंड वर्सेस भाई हुआ है ना, मैंने अभी देखा था. आई थिंक इंग्लैंड इज प्लेइंग ईरान. यस. सो भाई ईरान डिफेंसिवली क्लासी, बट ओवरऑल अटैकिंग थ्रेट के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है. ईरान ऑलवेज ट्रेडिशनली डिफेंसिवली दे प्ले रियली रियली वेल, बट दैट्स देयर गेम. That's their game. Whether England can just come out of their shell and just hit them for number of goals. So भाई ये सारे पैसे YouTube लेके जाता है भाई. एक तो एल्गोरिथम समझ में नहीं आता कि भाई ऐड चला के कितने पैसे क्या है, भगवान ही जाने. Exactly. I am surprised by the way Pepe has handled. Yes भाई, कल तीन गेम है. फर्स्ट इज ईरान वर्सेस इंग्लैंड, सेकंड इज सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स, थर्ड इज यूएस वर्सेस वेल्स. इसके लिए तो आई एम ऑल्सो वेटिंग भाई. इसका तो 100% वॉच अलोंग करूंगा. इट्स गोना बी फाइडी, इट्स गोना बी फाइस्टी. मतलब गोल्स उस तरीके से देखने ना मिले, लड़ाइयां जरूर देखने मिलेंगी भाई. इट्स गोना बी फन. तो मैं एक्सपेक्ट करो, लड़ाई 100% एक्सपेक्ट करो. और भाई मैं बीच में बैनर भी चलाते रहता हूँ फॉर स्पोर्टिकोस. सो दोज हु हैव नॉट येट clicked on the link, do check out. And bhai, my Insta as well as Twitter handle is in the description as well, so don't miss out. भाई दंगे वंगे रहे फुटबॉल ग्राउंड पे तो नहीं, but I am looking at this point of time, very cagey match जिसको बोलते हैं, very feisty match जिसको बोलते हैं. They won't give anyone a single inch. ठीक है, क्योंकि दोनों को ही both teams, they don't want to lose against each other, because USA is not a football superpower at this point of time, you can say. But so Iran is someone who won't want to lose against US at this point of time, to be very honest.
to be very honest. तो 25 मिनट में गेम शुरू होने वाला, 10-15 मिनट और स्ट्रीम करके आई विल भाई ऑब्वियसली वी कैन गेट इनटू वर्ल्ड कप, बट दैट नीड ड्रास्टिक चेंजेस. सिर्फ बोल के नहीं हो पाएगा यार कि हम इस साल में वर्ल्ड कप खेल लेंगे. सिर्फ बोलने से नहीं होगा. वी नीड टू डू अ लॉट. वी नीड टू डू अ लॉट टू रीच दैट लेवल. सिंपल सी बात है. सिंपल सी बात है. यू नो, उस लेवल पे अगर जाना है तो भाई इट विल टेक प्रॉपर प्लानिंग. प्रॉपर 10 साल का तुम्हें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. 10 इयर्स मिनिमम. तुम 10 इयर्स उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तब जाके कुछ होगा. अगर होस्ट किया तो खेलते ही. फर्स्ट मैच बोल तो रहे हैं कि इक्वाडोर के प्लेयर्स को पैसे ऑफर हुए हैं, बट लेट्स सी. एग्जैक्टली भाई. पेड फैंस भाई बस कतार पहुंचो. कतार पहुंचो, बैनर लेके. यू नेवर नो, बना दे तुम्हें पेड फैंस. यू नेवर नो. चलो भाई फाइनल प्रेडिक्शन बिफोर आई एंड द स्ट्रीम. फाइनल प्रेडिक्शन गाइस, फटाफट. 15 लोग हैं अभी. फटाफट से प्रेडिक्शन आनी चाहिए. मुझे बताओ क्या लगता है, हु इज गोइंग टू विन द फर्स्ट गेम. हु इज गोइंग टू विन द फर्स्ट गेम. क्या लगता है भाई लोग? फटाफट फटाफट. अरे भाई साहब, शिवा भाई सेइंग टू ऑल. करण भाई सेइंग कतार. आदित्य भाई इज काउंटिंग द एड्स. फटाफट बोलो भाई लोग, फटाफट. अनुराग भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. अनुराग भाई सेइंग ड्रॉ. आदित्य भाई सेइंग 3-1 कतार. अर्कोजीत भाई सेइंग 3-1 इक्वाडोर. ओके चलो भाई, सबके एक बार आ जाए भाई. उसके बाद आई विल फाइनल प्रेडिक्शंस बिफोर द गेम बिगिन. इट विल स्टार्ट इन 20 मिनट्स ऑलमोस्ट. सो फटाफट से स्कोर्स प्रेडिक्शन कर दो. गौरव भाई सेइंग कतार 3-1. I do feel that it's gonna be a draw. I do feel so. You know, in my opinion, it's gonna be a draw. मैं स्कोर प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, but yeah, I feel that it's gonna be a draw. What do you feel, guys? अभी तक आ गया है जो भी आ रहा है. Even if you're joining for the first time, just get in the comment section. Make sure that you are making your voice heard. So at this point of time, Shivam is going with her draw. Anurag bhai is going with her draw. I am going with her draw. Arkojit bhai is going with outright Ecuador. 5-5. अरे आदित्य भाई, one thing is for sure, really. But yes, I am also willing to, I am also excited to see what they bring onto the pitch. भाई अंबानी है भाई, अंबानी है, पैसा कम थोड़ी है. But वही वाली बात है ना, when you look at कोडिंग वाले बंदे रखे, टेक्नीशियंस रखे, because the website, the channel is not working. When you look at the way it's lagging, तुम भले ही तुम कितने भी लोगों को बुला के ले आओ, अगर वो लोग सुनने वाले नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली. ग्रुप से तो बाहर यार, आई डेफिनेटली फैंसी देम, बट पहला गेम डेफिनेटली बहुत जरूरी है यार. फर्स्ट गेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस, जो भी था यहाँ पे उन्होंने दे हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड. 2 मिनट और रखता हूँ मैं स्ट्रीम. दो इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट, यू गाइस कैन प्रेडिक्ट. स्ट्रीम इज डेफिनेटली गेटिंग अ बिट बेटर एज वेल. सो भाई ओपनिंग सेरेमनी हो गया प्रत्यय भाई. ओपनिंग सेरेमनी इज डन. अब फुटबॉल शुरू होएगा 20 मिनट में. ओपनिंग सेरेमनी होगा भाई. ओपनिंग सेरेमनी ज्यादा देर का नहीं होता ना भाई. इट विल बी लाइक 30 मिनट्स मैक्स. 30 मिनट्स मैक्स. आदित्य भाई स्टिकर खुद से ऐड होते रहते हैं. दम जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे. अरे दीपांकर भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. राइट. अरे भाई वी डोंट हैव दैट मच मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा
year by year you can build so that when you go and try to host it, because जो बड़े बड़े शहर है, you know, when you look at the bigger cities, you have that infrastructure in terms of hotel and all, you know. So now we will just hopefully see India getting that World Cup very shortly. भाई देखो वही है ना, even they will be looking at this. Even they will be looking at this. Yeah. मैं वही बोल रहा हूँ ना, they have spent a lot of money. They have spent a lot of money. भाई पीछे ही है यार, पीछे ही है, तो वहीं पे फुल ऑन आज दिन भर कीर्तन चल रहा है, फुल ऑन। चलो गाइस, फाइनल प्रेडिक्शन सबके आ गए हैं। दीपांकर भाई जैसे ने बोला भाई 220 मिलियन उनके पास, दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ मनी, you know, they have that sort of a money, so they can do it. We don't have that, so हमें year by year we need to improve, and we can hope that someday we can host the World Cup. So with this guys, thanks a lot for being tomorrow. Thanks a lot.